Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Genix Academy. So this is a series about previous year questions for class 10th Cbse chemistry. A rapid fire discussion haba where we will discuss everything from basics to the advanced level. Also ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା ନା previous year questions गुड़ाक one by one breakdown କରିବା each point जहाँ अच्छी details रे मु टिके sum up भी कर देबी chapter टा right on the sideline and आमे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करिबा मोस्टली 2024 2023 2022 लास्ट 3 इयर्स रा मु नेछि and if you like it then please share this video, subscribe to our channel for more such contents and do like it. Okay, so basically starting करिया जो आमे acid bases and salts what exactly acids मु रे brief idea दे दोछि acids कोन bases कोन and salt कोन. The acids are those substances which when dissolved in water produces a hydronium ion as the only positively charged ion. Produces a hydronium ion as the only positively charged ion. For example, HCl को जतबेला हमें पानी रे पकेबा, we know that HCl will split into H plus and Cl minus. It has a H plus ion, right? So HCl plus water gives rise to a जो H plus टा H2O सहित पळाइबो and we shall have H3O plus ion plus Cl minus ion, right? तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करला and Cl minus ion. तो हाइड्रोनियम आयन excuse me. So hydronium ion is the only positively charged ion. This is your acids. What are bases? Bases होची when bases को हमें पानी रे पकेबा it will have the negative ion as hydroxyl ion. जे OH minus ion produce करिवो से bases. Bases या तो metal oxide ही परिवे, metal oxide से परिवे और metal hydroxide से परिवे. Metal oxide या तो metal hydroxide. Hydroxide that means it will have an OH minus ion. Oxides mean it will have O2 minus ion. These are bases. What are salts? तो हम acid से तो base मिसेगा, acid से तो base मिसेगी. That reaction will be a neutralization reaction. So we will have salt plus water. Okay. Also bases रा और भी type अच्छी. Bases रे गुटे अच्छी alkalis. What are alkalis? ना हमें base पढ़िले. Out of these bases जो base टा water रे soluble हो, out of these two bases जो bases टा water रे soluble हो, that is your alkali. The soluble bases are known as alkalis. Soluble bases are known as alkalis. Okay. And बहुत reactions वगैरह अच्छी. Acid टा what would happen? Metal टा acid से तो react करिवो, base से तो react करिवो, right? ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି chapter ରେ salts ରୁ various preparations गुडा अछि सेଗୁडा देखिबा. तो with questions हम डिस्कस कर देबा and मो mostly long questions नेछि. The series is based on long questions only. Okay, bit questions again our session नहीं हम डिस्कस कर देबा bit questions. चलो start करिए. The pH of a sample of tomato juice is 4.6. pH टा 4.6. तो pH टा 4.6 माने कोन सजेस्ट करछि? pH टा जदि 4.6 हला, pH टा 4.6 हला से कोन सजेस्ट करछि? pH टा 4.6. तो व्हाट डज इट सजेस्ट? हमें जानि छै जे pH होछि कोन याको पोटेंशियोमीटर एंड समथिंग कहउछन्ती, पोटेंस कहउछन्ती. दैट मींस यार पोटेंशियल टा H+ आयन रो pH टा 1 7 and 14. जदि 1 ରୁ 7 भितर रहला दैट इज योर एसिड. 7 ରୁ 14 रहले बेस. ओके, एंड अगेन pH अबे अछि केते अराउंड 80 अछि 4.6. तो इट इज अ मॉडरेट टू वीक एसिड. तो आर एसिडिक प्रॉपर्टी अछि जो गुडा का एसिडिक प्रॉपर्टी सी कोन तार टेस्ट टा सोर थिबो, तार टेस्ट टा कोन थिबो सोर थिबो. तो फर्स्ट आंसर कोन होबो? द pH ऑफ अ सैंपल टोमेटो जूस इज 4.6. हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी in taste? तो taste रे it will कौन होबो तारा taste टा सोर आसीबो. Give reason to justify the answer as pH of 4.6 produces acidic nature. It produces what kind of nature? Acidic nature. That's why तारा taste टा कौन होबो सोर होबो. बुझियोला? Next question answer. How do we differentiate between strong acid and a weak base? तो
we know what strong acid is. Strong acid कौन ना strong acid होची सी strong acid which when dissolved in water which when dissolved in water ionizes completely ionizes mostly completely ही ionize हुए completely to produce H plus ion अधिक H plus ion produce करिए whereas weak base होची सीधा okay which when dissolved in water when dissolved in water does not ionize completely so सेथरे OH minus गुडा कुछ produce होगा partially produce होगा OH minus ions as well as her molecules थिबो बुझी होला चलो next question the acid rain can make the survival of aquatic animal difficult how तो एसिड रेन टा केमिति डिफिकल्ट होची ऑब्वियसली कौन हुए ना ड्यू टू एसिड रेन pH टा कौन हो जाए pH टा जनरली जदी 7.1 रो 7.8 भितरे बेसिक्स रहले it is easy for the aquatic animal to survive but if the pH of water reduces to somewhere around 5.2 or 5 point something it will be difficult for aquatic animal to survive because acidic nature ta बढ़ी जिवो and breathing रे problem होबो right चलो आंसर देखि दबा कोन अछि एटा लिखिले the taste of tomato juice will be slightly sour the pH of 4.6 indicates that the tomato juice is an acidic and acids are sour in taste acids that give H plus ion or H3O plus ion are strong acid bases that give OH minus ion are weak bases खाली एति लिखि देबोनी because the acid और base पचन it has asked strong acid and weak base so strong acid पे तमे लिखिबो कोन complete ionize है कि complete H plus ion दबो complete ionization होबो whereas r कोन होबो r partial होबो not complete because strong bases भी अछि ना strong bases गुडा को कि जे पानी रे पड़े कि complete OH minus ion दोथु एटा कोन एटा partial dissociate है कि कम प्रोड्यूस करिवो OH minus ions also OH minus ion बाकी रेस्ट गुडा को molecule state रे ही रहि जिवो right living animals can survive within pH range of 7 to 7.8 कहली एटा 7 to 7.8 range रे pH रे survive करि पारि but if the pH of river water become low due to acid rain which is below 5.6 then survival of aquatic animal becomes difficult because acid रे survive करिबा breathe करिबा difficult होए right चलो नोट डाउन कर दियो स्क्रीनशॉट ले जाओ whatever suits you देखो salts play a very important role in our daily life sodium chloride which is known as common salt is used as almost in every kitchen so salts को हम daily day to day life में बहुत important role play करे sodium chloride which is known as common salt is used almost in every kitchen use होची baking soda is also a salt used in faster cooking as well as in baking industry the family of salt is classified on the basis of cations and anions present in them so identify the acid and base from which sodium chloride is formed so sodium chloride मान तो formula जानी चाहिए NaCl ये कोथ्रु फॉर्म होची तो NaCl टा कोथ्रु फॉर्म हेछि obviously जदि हमें HCl सहित कोन मिसेबा NaOH मिसे दबा complete neutralization हे जिवो right this is the neutralization reaction and in fact जदि base टा गोटे कोन थिबो हाइड्रोक्साइड थिबो याको टाइट्रेशन भी कहउछन this is also known as titration is a part of neutralization reaction तो HCl टा हमरा NaOH सहित मिसले NaCl plus कोन प्रोड्यूस करिवो वाटर प्रोड्यूस करिवो ओके एडा होछि रिएक्शन find the cation and anion present in calcium sulfate रो फार्मूला कोन CaSO4 राइट तार cation की अछि cation होछि Ca+2 and anion होछि SO4 2- ठीक अछि sodium chloride and washing soda both belong to the same family of salts justify so sodium chloride is your NaCl what is washing soda होछि Na2CO3 dot NH2 एतरे दीटा जारे राइट दीटा जारे we have कोन Na plus ion जदि तार cation दा सेम अछि समानर cation सेम अछि they belong to the same family of salt that's why they belong to the same family of salts
और रे क्वेश्चन देछि डिफाइन द टर्म pH स्केल नेम द सॉल्ट ऑब्टेन्ड तो pH होची कोन pH होची इट pH स्केल ता कोन डिटरमाइन करे pH स्केल ता डिटरमाइन करे से केते एसिड और केते बेस it basically determine the range of the acid or bases, right? Say a strong acid या strong base, weak acid या weak base, moderate acid या moderate base, so it gives the range. Name the salt obtained by the reaction of potassium hydroxide and sulfuric acid. Potassium hydroxide KOH and sulfuric acid होची हमर H2SO4. को salt ता दबो again this is a neutralization reaction, तो एडी कोन प्रोड्यूस करिवो एडी हबो K2SO4 plus water कौन प्रोड्यूस करिवो K2SO4 which is potassium sulfate तो को सॉल्ट प्रोड्यूस होबो potassium sulfate स्पेलिंग रे जाओ ने स्पेलिंग दा यू कैन चेक इट योरसेल्फ राइट नेक्स्ट अच्छी सेडा ही केटायन सेडा भी थिला एसिड HCl बेस NaOH एडा भी ठीक लिखि छै वॉशिंग सोडा एगुडा का Na+ दिले जाय सेम अछि pH scale measures how acidic or basic a solution is ranging from 0 to 14, right? 0 to 7 is acid, 7 to 14 with the base, okay, with 7 being neutral, 7 the neutral. When potassium hydroxide react with sulfuric acid H2SO4 it forms potassium sulfate. A neutral salt its aqueous solution has a pH of around 7 और तारा aqueous solution obviously 7 थिबो, right? Note down कर दियो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो A few crystals of ferrous sulfate were taken in a dry boiling tube and heated. Tiny droplets were absorbed in the tube after some time. छोटे छोटे droplets को डागा absorb होला. Okay, a few crystals of ferrous sulfate were taken in a dry. What is ferrous sulfate? Ferrous देछि, it is not ferric. Ferrous माने valence टा तो हमें जानी छै Fe+2, sulfate होछि SO4 2 minus. तो basically से FeSO4 कथा कहूछि. And when taken in a dry boiling से कहूछि a few crystals माने FeSO4.7H2 कथा से कहूछि हमें जानि देले. Okay, a dry boiling tube and heated in tiny water droplets were observed in the tube after some time. तो किछि time ପରେ tiny droplets गुडा आसीगला. From where did these water droplets appear? Explain. से कोडे water droplet appear हला जेतेबेले आमे FeSO4.7H2 टा हीट करले से वाटर टा इवापोरेट हेगी टाइनी ड्रॉपलेट्स हला obviously जो FeSO4.7H2 which is also known as green vitriol आपा कोन कहउछन green vitriol कहउछन आकु हीट करले बिकॉज़ क्रिस्टल आकु जदी हमें हीट करबा एथरो त हमर वाटर मॉलिक्यूल गुडा का बाहर पडिबो केतरा 6 टा वाटर मॉलिक्यूल केतरा केस रे 17 वाटर मॉलिक्यूल भी बाहरगी सेटा हीट करले सेडो ड्रॉपलेट्स गुडा का बाहरबो बुझियला व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व तो FeSO4 रो को कलर टा थिला ग्रीन कलर टा थिला बिकॉज़ ताको ग्रीन विट्रियल कहउछन तो ग्रीन रु से कोन हे जिवो व्हाइट कलर को चेंज हे राइट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 क्रिस्टल केतरा वाटर मॉलिक्यूल अछि रे 17 वाटर मॉलिक्यूल अछि ना तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द क्रिस्टल्स राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म write the molecular formula of crystalline forms of copper sulfate. अच्छा copper sulfate ର crystalline पचाच कौन तार formula CuSO4.5H2 आपको याको काम कहउछनी this is known as blue vitriol. This is known as blue vitriol. sodium carbonate होतरो crystal से कहछ that is Na2CO3 sodium carbonate ର crystal टा Na2CO3.10H2 washing soda टा है ना Na2CO3.10H2 okay state how is plaster Pyqs obtained from gypsum what is gypsum कोन gypsum होची CSO4.2H2 याको जतोला हमें हीट कर दबा याको हीट कर देले हमरा plaster Pyqs आजे CSO4.5H2 plus 1/2 water molecule 1/2 माने केते 3/2 1.5 water molecule बाहर को इवापोरेट हेगी पड़ेगा राइट टू यूजेस ऑफ plaster Pyqs तो आपको डेकोरेशन पर्पस रे यूज होची डेकोरेशन
टॉयस वगैरह रे यूज हुए आउ कोथरे यूज हुए ना सपोज तमरो हाथ माने कोन हाथ भांगी जाईची हाड़ वगैरह डिस्प्लेस हो जाईची टिके तो सेइथरे जो व्हाइट कलर गोटे पिंदंती दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये कोन ना बोन फ्रैक्चर वगैरह रे कोन रिपेयर वगैरह रे यूज हुए राइट फ्रैक्चर्ड बोन गुडा रे रिपेयर रे यूज हुए बुझी होला तो देखि परिबो सेना ही लिखा है कौन लिखा है देखिलो the molecules of water crystallization in ferrous sulfate crystals get evaporated on heating बस सेना ही लिखा है ना get evaporated on heating ferrous sulfate get evaporated on heating green रो white हे गला सेटा तो लिखला हमें Na2CO3.NH2 एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि on heating gypsum हाँ एटा लिखिबो 373 केल्विन आई मिस दैट एटा 373 केल्विन रे होची CSO4.5H2 1.5 water molecule बाहर पड़ोची मेकिंग टॉयस मटेरियल फॉर डेकोरेशन सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड सब गुडा हे होला टेक अ स्क्रीनशॉट दरकार जदी अछि हे होला चलो नेक्स्ट an acid X present in a tamarind रे ଗୋଟେ acid X अछि and mixed with Y produces a mixture अच्छा tamarind माने को टाइप रे एसिड थिबरे ऑब्वियसली एक्स्ट्रा हिजबो तमरा कोन को एसिड टार्टारिक एसिड को एसिड tartaric acid okay is mixed with Y produces a mixture of Z on addition to a dough when heated makes cake soft अच्छा तो सोडियम बाइकार्बोनेट Y is prepared from common salt and helps in faster cooking तो Y टा तमरा कोन हे जिवो व्हाट अ मिनट हाँ देख हाँ कम पड़ले एक्स्ट्रा टामारिन को एसिड थिबो एक्स्ट्रा हे जिवो हमर को एसिड टार्टारिक एसिड एक्स्ट्रा हो जाउछ हमर टार्टारिक एसिड राइट अच्छा Y कोन Y से तो मिक्स करके से डो बनाउछ जो फुलिया पई तो सी हे जिवो तमरे कोन हां बेकिंग सोडा सही थ्रू हमर कोन Z बाहर छे Z इज योर कोन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बुझियला तापरे राइट द कॉमन एगुडा का हाउ इज Y prepared and how does it help making the cake soft and spongy illustrate the reaction with suitable chemical equation write the name and chemical formula of mild base other than Y used as an antacid एटा फर्स्ट कहि दोछु मु antacid रे के यूज होछ magnesium hydroxide MgOH twice है magnesium hydroxide as an antacid यूज होची एबे देखो प्रिपरेशन ना मु देखौची प्रिपरेशन दा कहार सोडियम बाइकार्बोनेट केमते प्रिपरेशन होची सोडियम बाइकार्बोनेट पय हमें कोन करबा ना एक्चुअली से जो डाउटा केमिति हमरा बेसिकली कोन होची से फुलिया रे केमती हेल्प करची सेडा हमें देखि केमती सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर होची सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर होबा पय फर्स्ट हमको सॉल्ट दरकार व्हिच इज NaCl सेइतरे टिके पानी मिसे दबा ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दो तो हमरा प्रोड्यूस हेजिबो कोन NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड बाहर राइट जो NaHCO3 आसिला सेही NaHCO3 को सेही NaHCO3 रु जदी आउडे H+ टी मिसे दबो कोन हे जीवन आउथरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बाहरिबो प्लस कोन बाहरिबो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड गुटे बाहरिबो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बाहरिबो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बाहरिबो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ता बाहरिबो ना बाहरिबो सेही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ता ही तमरो ब्रेड वगैरह
या तो जो बेकिंग जिनस गुड़ाक जो बेकिंग सब्सटेंस गुड़ाक ताको स्वेल करे हेल्प करे राइट बाकी गुड़ा सब आंसर लिखिदेले तो स्क्रीनशॉट नहीं पारे नेक्स्ट देखो राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मार्बल मार्बल रो केमिकल नेम एंड फॉर्मूला से कहूँ कौन से मार्बल रो केमिकल नेम एंड फॉर्मूला मार्बल टा कौन कैल्शियम कार्बोनेट marble is your calcium carbonate. It has been found that marbles of Taj are getting corroded due to development of industrial areas around it. Explain this fact giving a chemical equation. कौन फाउंड है that Taj are getting corroded due to development of industrial areas around it. Obviously जेहेतु चारियाडे इंडस्ट्रियल एरिया गुडा थाउचे एक्सप्लेन दिस फैक्ट गिविंग अ केमिकल इक्वेशन दबा केमिकल इक्वेशन दा आ कोन अछि कर दबो लास्ट को लिखि दबो व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 is passed through lime water जानि छी हमें इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की केमिति लाइम वाटर मिल्की होची देखो ए आंसर ता फर्स्ट लिखि दोछि तापर बी आंसर ता नेक्स्ट पेज लिखि देबो what happens when CO2 is passed through lime water what is lime water calcium hydroxide is your lime water pass to carbon dioxide कौन प्रोड्यूस करिवो तो देखि परिबो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ता कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसले एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करिवो CaCO3 ओके अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट सहित फॉर्म करिवो अगेन ए कैल्शियम तो एटा कोन हला एटा तमरा मिल्की यार मिल्कीनेस आसी जीवो बिकॉज़ ये तमरा कैल्शियम कार्बोनेट ता इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट ता कोन इनसॉल्युबल थाउच अगेन व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 is passed in excess विच यदि एक्सेस रे पास करिवो CaCO3 प्लस आउरी एक्सेस तमे करिवो इट विल ये कोन हे जीवो कैल्शियम कार्बोनेट ता एटा यदि एक्सेस रे पास कर दबो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थिबो कार्बन डाइऑक्साइड ता तमरा ये कोन थिबो एक्सेस रे थिबो एक्सेस रे थिले एक्चुअली फॉर्म हे जीवो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस एटा फॉर्म हे जीवो एंड दिस इज योर सॉल्युबल ये तमरा बेसिकली सॉल्युबल तो लाइम वाटर टा जो मिल्की थिला तो लिखिबो कोन द मिल्कीनेस डिसअपियर्स कोन लिखिबो द मिल्कीनेस disappears milkiness disappear ये disappear हे होची milkiness ता and it becomes white बुझियोला से रिएक्शन ना मु लिखि दोछि देखो it has been found that the marble of Taj रो marble रे कोन होची the chemical formula of marble calcium carbonate it is name is calcium carbonate समस्त जानि छे Taj Mahal one of the seven wonders of the world situated at Agra is continuously losing its luster day by day due to rapid industrialization which causes acid rain. The sulfuric acid present in the acid rain causes the marble calcium carbonate to be washed. माने कौन हेतिबो देखो we have कौन calcium carbonate CaCO3 ता सहित से जो सल्फ्यूरिक एसिड ता थिबो तो सल्फ्यूरिक एसिड जतले मिसिबो तमरो फॉर्म हे जिवो कैल्शियम सल्फेट कौन फॉर्म होबो कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होबो ता सहित कौन बाहर थिबो वाटर एंड ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गैस बाहर ए जो कैल्शियम सल्फेट ता बाहर उची ए कैल्शियम सल्फेट ता हे तमरो कौन ना बेसिकली डिटोरिएट कर दिए से वॉल गुला को डिटोरिएट कर दिए तो वॉल ऑब्वियसली तार गोटे बहुत बड़ माने मोनुमेंट सेटा खराब हे होची वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा है ना तो present in the acid rain causes the marble to be washed off as calcium sulfate leading to deterioration of such a splendid piece of architecture the equation da deji as you can see बुझियला बुझियला नोट डाउन कर दियो और लास्ट आंसर ता तो ऑलरेडी कहि सारछि कोडा से सी वाला पार्ट ता कौन से सी वाला पार्ट ता ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ता जदी कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसिबो ये तुमरा कौन फॉर्म करिवो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करिवो जोडा कि इनसॉल्युबल वालाडा इनसॉल्युबल तो ये तुमरा कौन इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ये लाइम वाटर टा कौन करिवो मिल्की करिवो कार्बन डाइऑक्साइड ता लाइम वाटर को मिल्की करिवो एक्सेस अमाउंट रो जदी कार्बन डाइऑक्साइड नबो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जदि आपको एक्सेस रे नबो ये एक्सेस रे नेले कोन हबो तमरा कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करे CaHCO3 ट्वाइस फॉर्म करिवो आ मिल्कीनेस ता डिसअपियर्स लिखिवो
राइट, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। नेक्स्ट नोट डाउन कर दियो, जाओ नोट डाउन करियार अछि। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc। केते ml अछि रे? 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc। ठीक अछि, what is sodium hydroxide? Formula that is your NaOH is added to few pieces of granulated zinc। granulated zinc which is added, अच्छा granulated zinc ର meaning होची कौन? गुंड गुंड हेगी थिबा। granulated zinc ता अधिक यूज है because it has an increased surface area टा increase है, that's why granulated zinc टा prefer हुए। metal carbon test tube, when the content are warm a gas evolve which is bubble through soap solution। अच्छा देखो सोप सॉल्यूशन रे बबल करे, देखिता कोन होची जिंक सहित NaOH पास करले हमें जानि छे कोन प्रोड्यूस करिवो Na2Zn O2। मु बैलेंस करनी, बैलेंस करिवो तमे Na2Zn O2। ओके, और एप्लोड अबे जदी एमदी 2 मल्टीप्लाई कर दबा Na2 हे जिवो Zn एंड O2 हे जिवो, तास तो को गैस रिलीज हबो? हाइड्रोजन गैस बाहरिवो। को गैस बाहरिवो? हाइड्रोजन गैस बाहरियो व्हिच इज बबल थ्रू सोप सॉल्यूशन। ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस ता कोन हे जिवो? हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म करिवो, बबल्ड करिवो कोडी? सोप सॉल्यूशन रे। इट इज बबल थ्रू सोप सॉल्यूशन। ओके, इट इज बबल थ्रू सोप सॉल्यूशन। Write the equation of chemical reaction involved and the test to detect the gas। write the equation of chemical reaction involved लिखि देले and test to detect the gas। तो हाइड्रोजन गैस ता कोन? It burns with a pop sound। it burns when a glowing splinter, when कौन लिखिबो एमडी? when a glowing splinter brought near this gas, brought near this gas, it burns with a pop sound। it burns with a pop sound। name the gas which will be evolved when the same metal reacts with dilute solution of strong acid। dilute solution of strong acid माने let's say HCl। so इतने जदि तमे जिंक ता रिएक्ट करिवो, नेम द गैस फाउंड व्हिच विल व्हेन द सेम मेटल एंड जिंक ता, तो ये को गैस बाहरिबो? ZnCl2 प्लस अगेन को गैस बाहरिबो? हाइड्रोजन गैस ही बाहरिबो। तो व्हिच गैस विल इवॉल्व? हाइड्रोजन गैस ही बाहरिबो। को गैस बाहरिबो? हाइड्रोजन गैस ता बाहरिबो। ऑलराइट, बुझी होला? टेक अ स्क्रीनशॉट, आंसर्स गुडा को लिखि दियो। for offline classes कोडी हुए ना जेनिक्स एकेडमी रे हुए, राइट। फॉर क्लास 9 10 CBSE नुआ बैच स्टार्ट होची। यू कैन विजिट आवर सेंटर ऑफलाइन क्लासेस पाई। ओके, नुआ बैच स्टार्ट होची, तो फॉर 9th स्टूडेंट एंड 10th एज वेल। 10th रो क्रैश कोर्स चली छी, बोर्ड भी अहेड अछि। ओके, सेगुडा को पाए तमे विजिट करि परिबो ऑफलाइन सेंटर एंड आफ्टर दैट
11th रो बैचेस भी स्टार्ट हे वालानी फॉर 11 12 डू विजिट आवर ऑफलाइन सेंटर clear हे वाला this is your answer. It is observed that active metals like zinc react with strong bases like NaOH or KOH to liberate hydrogen gas and corresponding salt. The evolution of gas is confirmed by the bubble formation in the soup solution. Test to detect अच्छा ए पाखरे रिएक्शन टा तो मिसिंग अछि फर्स्ट ए पाखरे रिएक्शन टा लिखि दबो कोडा जिंक सहित NaOH मिसेले कौन प्रोड्यूस हबो Na2ZnO2 Na2ZnO2 बैलेंस कर दबो केमती एडी उटे 2 मल्टीप्लाई कर दबो प्लस को गैस बाहर छि हाइड्रोजन गैस बाहर छि राइट नेक्स्ट when burning matchstick एटा तो तार येटा burning matchstick is kept in the mouth of this test tube a pop sound pop केम दुए in the type of it burns with a pop sound right is heard which confirms the presence of hydrogen gas when zinc metal reacts with dilute solution of strong acid hydrogen gas is evolved. For example zinc सहित HCl मिसेबो which is in the form of dilute को gas to release करिवो zinc chloride plus hydrogen gas को gas बाहरिवो zinc chloride plus hydrogen gas बाहरिवो बुझिवाला नोट डाउन कर दियो नोट डाउन कर दलो सो एटा थिला टॉप 5 क्वेश्चंस अगेन आ कोन चैप्टर अछि केमिस्ट्री रो या तो फिजिक्स रो तो सेगुडा को आनिबी इनफैक्ट मैथ्स रो भी दरकार पड़ला हम आनिबा एसिड बेसिस सॉल्ट अछि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वगैरह अछि तो इफ रिक्वायर्ड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक माने कमेंट डाउन करो नेक्स्ट को चैप्टर रे हम आनिबा बिट क्वेश्चंस गुडा का अछि दिस आर लॉन्ग क्वेश्चंस गुडा का मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चंस गुडा का देखि पारदिबो तो बिट क्वेश्चंस एंड 2-3 मार्क्स क्वेश्चंस गुडा भी हमें आनिबा तो फॉर this will be it for today's class we will meet again thank you and bye